play, not just for now, but in the future times also. As India arising and also world is getting divided, in that context, India's position is very important. That's why we today have very prominent speaker in the topic, and we also have presiding this session by Ambassador Viren Gupta ji. I will first introduce Ambassador Viren Gupta ji, and then our chief keynote speaker. Now, Ambassador Viren Gupta, he is a career diplomat. He was ambassador in many countries, and after in foreign services, he was also DIG in one of the very prestigious Indian defense think tank called IDSA. Indian Defense, it's a think tank very reputed over there. He was DIG there, and then he is now President of Antarrashtriya Sahyog Parishad. He also policy advisor to Foundation for India and Indian Diaspora Studies. We are fortunate to have his guidance on various matters in general, but also in Indo-US relations. So he will be setting context in that before we invite Dr. Sudhanshu Trivedi ji. Now, Dr. Sudhanshu Trivedi ji requires no introduction. As you know that he is one of the highest ranking spokespersons in India. He is so articulate, and his name is Trivedi, in a way that person who knows three Vedas. Nowadays, that seems to be mostly just for the namesake. However, knowing him in person, you really, if you understand, he is a person who really has vast knowledge on variety of topics. The topics ranging from religion, history, technology, and politics. So if you think that if these three are the different modern days Vedas, then he really masters them. The religion, cultural history, modern day politics, and he himself is an engineering, we can say the expert, not only expert, but he is a PhD. He was also in academics earlier. He had been advisor to then Chief Minister Rajnath Singh ji in Uttar Pradesh when he was a Chief Minister. He is member of Parliament, and of course with his different talks in Parliament on various policy matters, as well as I said that he is not only the spokesperson, but if you look at the various panels in India, whether it's election time or any crisis, any matters, he is a well sought in all the television channels because his articulation is so succinct, so perfect, and also very convincing. So that's why we are very fortunate to have Dr. Sudhanshu Trivedi ji today present among us. So let's start with Ambassador Viren Gupta ji. I welcome you. ये देना पड़ेगा क्या ऐसे उससे बोलो वो आपका माइक लगा join Khandarao ji in welcoming Honorable Trivedi ji. He's a very public face in India. We see him on television quite frequently. Very articulate and very reasonable projection of BJP's views. So I'm sure you are looking forward to listening to him on a very important topic that we have for today, the global geostrategic landscape.
and what is India's place in it, and what role can the diaspora play? Now, before I invite him to speak, I'd just like to make a few points. One is that when you talk about global geostrategic landscape, it has undergone transformational change. The problem is that we are used to looking at the global strategic landscape in terms of what we have seen in the good part of the 20th century. Prior to the World War, when there was balance of power, the world was always divided into two different camps. And each camp was 2 or 3 countries on one side and 2 or 3 countries on the other side. Mainly the balance was drawn within Europe. After the World War, the preponderance of the preeminence of the European powers reduced a little bit, and America emerged as a very powerful country. So you have the onset of Cold War, which lasted for nearly 40 years. And it was 2 camps, completely watertight, bipolar situation. When the Cold War ended, we had a short period of unipolarity. America was the only powerful country left in the world. But increasingly you're moving towards multipolarity. And these multipolarity, as we understand, these are not angular polars. It's very diffused, very visiparous, not clearly marked out, and it's constantly evolving. Maybe individual countries, maybe group of countries. And what we have to understand is that these alliances and affiliations are not so watertight as we are used to seeing in the 20th century. And our problem arises in today understanding the situation is that we don't understand that every country is trying to optimize its relations with a diverse group of countries. And I think today's context, when you look at Ukraine situation, and despite the fact that we have extremely good relationship with America, a lot of people tend to argue that why is it that India is not converging with America, and there is a difference. Now I think we have to, and this doesn't deter from the fact that even though India may not be fully in sync with American thinking on Ukraine, that India still enjoys a very good relations. There is a reason, and we'll get into it. What I'm saying is that one has to, in the context that the division is not very watertight. So it is not like I'm for America, a country is for America, or you're against me. It is not like that. How it used to be in the Cold War and how it used to be before that. And what is extremely important is that we must understand this particular factor for a holistic evaluation of any relationship. What is India's place? Is it a big power? Maybe, maybe not. Is it an independent pole? Maybe we haven't arrived there as yet. So rather than worrying about that, I feel that we have to focus on our challenges. We have several challenges. We have to continue to grow economically. That is our biggest challenge. We have challenges in the security field, in the political field. And I think our biggest problem is poverty. We have to, the eradication of poverty, to provide drinking water, to provide roads. These are areas which are of biggest priority for us. So we have no pretension of playing a big power role. This is an issue which has always engaged the attention of political parties. You all recall the famous Garibi Hatao slogan by Mrs. Gandhi. But I think it was very largely in the space of rhetorics during the Congress rule, an area where Prime Minister Modi in the last 8 years has done tremendous amount of work, which is well documented, which is for everybody to see how the access to electricity, access to cooking gas, and so many financing, all of that, a meaningful difference has been made. Now, very briefly, Khanderao ji,
to reflect on the India-US relation because this is something which is engaging everybody's attention. What I like to say is that at the people-to-people level, there has never been any doubt with regard to closeness between India and America. All of you, you recall people in India have great admiration for the liberal values and the opportunities that exist in America. Everybody wants to send his children to America to study and to work. And even in America, the positive disposition, I was looking at some report of the Gallup poll, nearly 77-78% people in America are said to be favorably disposed, positively disposed towards America. And this Gallup poll is done every year, and the numbers have been steadily increasing. When you look at the relationship, I'm not getting into the traditional legacy issues when America, despite shared democratic values, for political and strategic reasons, maintained a closer relation to Pakistan. That's something in the past. But insofar as India-America is concerned, 1998 we did the nuclear tests, and that created a lot of misgivings in America. But it didn't take very long for America to get over it. President Clinton visited India in 2000, and since then there has been a steady story of further improvement in the India-US relations, and each president took it to a further level. I don't want to go into detail because you all know that starting with the first agreement in 2002, and a number of agreements were signed. Today I can say that we have total framework of agreements for defense cooperation with America. And America has recognized India as a major defense partner. A lot of leeway has been provided, where what is called a strategic trade authorization, in which India is recognized as tier 1 country, which is generally reserved for allies and the Western nations. So, the short point is that India and America have steadily improved their relationship from 2000 onwards. In the last 20-22 years, our relationship has gone, such levels further. And it is, Prime Minister Modi is very committed to it. Obama was very committed to it. Trump took it further. President Biden has been on record as having said, echoed what Vajpayee said, natural partnership between America and India. So I think every president has taken it further. Now, is it because we have very wise leaders? Yes, partly. But I think partly because of the geopolitical, geostrategic convergence. I think this is what we have to understand. That there is shared threat perception, shared challenges between India and America, which drive us, to a closer and closer relationship. Now, what are these threats? And they have been articulated at various points in time. I would like to remind all of you two main threats. One is the international terrorism. America is targeted by the international terrorism, and so is India. So we have a common cause there. And the other, what they say, elephant in the room, China. Now China impacts on our security concerns very directly. And we've had instances of border incursions with China. So we are deeply disturbed by what China's intentions are. We are deeply concerned about how China would deal with us. Also, China maintains a kind of relationship with Pakistan. China has been doing all kinds of things. That's another story. I don't want to get into it. America also feels stressed with China because China has adopted a very aggressive posture, and China threatens America's geopolitical and strategic objectives globally,
but more importantly in the Indo-Pacific region. And America is deeply interested in the Indo-Pacific region. So I think before the Ukraine war happened, and I think nobody really very seriously thought that this threat from Russia had begun to decline. I still believe that the two main threats to America continue to arise from international terrorism in China. And I think these factors have brought India and America together. Now, once you have this strong... Are we going to hear from Mr. Yes, just one second. Just one Thank second. you. Now, there are some misgivings here about the divergence on Ukraine relationship. Now, what is important to understand is that we must have a holistic appreciation, and when there are friends, as India and America, then there has to be appreciation for what is the sensitivity of the other partner. And we have to work together. This relationship has to be approached from a sense of assurance, from a sense of better understanding that America and India are together. They don't have to be together on every issue, because on every issue there is an evaluation. India has its own concerns. Ukraine issue is not central to India's concern. India is more concerned about developments within our own region. So I think what I wanted to basically point out, that India and America continue to maintain very good relationship. If there are any misgivings, these misgivings do not detract, and I think our leadership has basically articulated that. Both Prime Minister Modi and Biden have already said it, that India and America. So with these few words, I'd like to thank Khanderao-ji, and I'd like to invite Honorable Trivedi. It's difficult to capture US-India relations succinctly and such a short time. So, Ambassador Viren Gupta ji had done the wonderful job and set the stage for this one. It's it's like video. Trivedi ji, is that Mic is working? yeah. So, respected Ambassador Gupta ji, Khanderao ji, and all the distinguished dignitaries present in this hall. Today, we are sitting in the Bay Area, which is considered to be the intellectual capital of the world as far as the technology is concerned. So, we all are somehow connected to the field of technology. Look at the global situation. We have come out, but still totally not come out from the COVID time. But that has given a very strong imprint of our mind that any time, any problem of this sort may not arise in future. And on the geopolitical issue, as Gupta ji has said, the looming problem of Russia-Ukraine war, with an apprehension of that it may not convert into any atomic or nuclear war, is also having some impact in our mind. So, I would like to say, and fourth aspect, that we are discussing about India's perspective. So, is there any connect? Sitting in the seat of technology, talking about virtually passing of the, hopefully, of the COVID era, then Russia-Ukraine crisis and India. I think if we are able to connect the dots, then we will be able to find out what the actual situation is. Also from the technology field, so I would like to say, when we are talking about the world order or the future of civilization, what role technology plays.
as he was saying, if you look, the last time when the world order changed, it was Second World War. How it changed? Prior to Second World War, the power center was Europe. The Britain, France, Italy, Germany. And the requirement of world dominance was any country which is having a powerful army. The indicators of powerful army was if they are having good air force, good artillery, pattern tanks, and logistics. But suddenly, the paradigm of technology changed when America conducted an atomic explosion on 16th of July 1945. अब एक 10 फुट का बम आया और आपके सारे फाइटर प्लेन्स, आर्टिलरी और पैटर्न टैंक पे भारी. So the paradigm of technology changed, the paradigm of power shifted from Europe to America. Even if within US you see, when this project was being undertaken, it was called Project Manhattan. When the power center was more towards the East Coast. And subsequently, the new technologies emerged and the power and prosperity shifted towards West Coast. In this context, we must also try to find out that when we are dealing with technology and power, we must have a very open mind. Sometimes what happens, we become occupied with the idea of the present technology. In this context, I would like to quote, when Project Manhattan was going on, one of the advisors of the President Truman, his name was Admiral William Leahy. He said that this entire Project Manhattan is going to be rubbish. Any bomb of this sort cannot be materialized. This I am saying as an expert of explosive. He was correct, because the explosives work on chemical force, and this going to be on the atomic force. That was a fundamental shift in the technology. So if he would have been preoccupied with the explosive technology available at the time, he would never have thought. ये मैंने इसलिए कहा कि आज जो existing technology है, if you look at the shift and pattern of the technology going on in the last 100 years, हमें उसी में नहीं बन जाना है कि इस existing technology में क्या है. अब आप देखिए कि what can be the new emerging technologies and how the power center can be shifted. अब हम दूसरी बात कहें कि in the last 100 and 125 years are considered to be the glorious years of technology. In 1900, it is said, even hardly the Marconi signal was able to cross the Atlantic, and by 2000, the world was connected with World Wide Web. By 1900, it was hardly, even pathology was not properly detected, and by 2000, the genetic engineering has come. A glittering age of technology. But look at the other picture. In Second World War, how many people died? More than 5 crores. And in 20th century, more than 10 crore people were killed by their regimes, by the governments and wars. And by the beginning of the 21st century, now I'm coming to that thing, a possibility of nuclear threat has put a question mark on the existence of our civilization. The possibility of ecological imbalances, if they go on for another half century or so, has put a question mark on our civilization. So in a way, this is going to be a very dangerous century. So it is just a way of looking at it, and that's why I'm saying we have to come out of our whatever say the mental box. Then we can analyze what the situation is. Now coming to the present, the China COVID situation. इसने हमको क्या सिखाया? There are two theories that COVID originated from Wuhan market. First, I would like to say this has also given an impression that for the first time in the history of human civilization, a single problem has engraved the entire world. All the countries were affected by this. अब हम उस एरा में आते जा रहे हैं जहां पर प्रॉब्लम सबकी है. Ecological imbalance, none of the country can say I'm not affected by it. Even terrorism,
More than 75% countries are affected, and none of the major country can say that I am not affected. There used to be era when Europe used to say these are the problems of the third world countries and others. Now they are the most affected. So, अब जो भी है वो global है. And if you look at China, if it has come from Wuhan market, okay. तो ये क्या शिक्षा दे रहा है आपको? भाई किसने कहा है कि चमगादड़ खाना है और वो भी जिंदा पकड़ के खाना है? Whatever is to be taken and whatever not to be taken, there has to be some structured guideline backed by a proper science. Like in our, now coming to the Indian perspective. In Indian context, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, भक्ष्य और अभक्ष्य का, there is a clear cut definition and depiction. Whatever you will take, up till now the science has been able to find out only how many vitamins, how many minerals, how many carbohydrates, energy, protein, etc. But there is no concept of tasir. There is no distinction that this thing is to be taken in winter, this is to be taken in the summer, this is taken in the rainy season, and not only this, in our concept, it is to be taken in the morning, it is to be taken in the night. दही मॉर्निंग में खाना है, दूध रात में पीना है, यह भी डिफाइंड है. और उसकी प्रवृत्ति क्या है, सात्विक, तामसी, राजसी, वो भी डिफाइंड है. I just want to say, if the theory which is propagated by China, innocently we are ready to accept that gives a jolt that we must think of our two types of thinking. One, what is to be eaten, what is not to be, and क्यों खाने का एक और भी रीजन बताएं. We have to do something new, something thrilling, something exciting. उसी में ले जाके फंसाया ना. जब हम ये कहते थे कि be very disciplined, be very traditional, because what tradition is, it has become a taboo. No. I ask you, if you're driving a car from your office to home, a blind corner comes, and when you turn your car, you will find there is a patch hole, a gadda hai. You stop your car, take it round, and somehow you manage to come out. Second day, third day, fourth day. अब fourth day जब आएगा, तो आप उस blind corner पे इस बात का इंतजार नहीं करेंगे कि जब गड्ढा दिखेगा तब मैं गाड़ी को राइट करूंगा. आप पहले ही गाड़ी को थोड़ा राइट ले लेंगे, ये assume करते हुए कि वहां पे गड्ढा है. What is this? This is your experience of last 4 or 5 days. But if you go by strictly scientific definition, you have done an unscientific thing. You have not perceived, you have not got an inference, you have not analyzed, still you have taken an action. What I am trying to say, as you are having the experience in the life, there are certain things which are the experience of the generation and experience of the civilization. Since we are the only continuing civilization of the ancient world, or of the world, you start from Chinese civilization to Indian civilization, Mesopotamian, Babylonian, Baghdad, Greece, Rome, British, and whether the Inca, Maya, Aztec of the American continent. So there has to be something which we must try to learn out as far as the new science of thinking. दूसरी चीज, नया करेंगे, दिल मांगे मोर, अब मोर में क्या क्या मिल जाएगा, इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए. Second thing, if it is a biological weapon, a conspiracy theory, if that is true, then what it indicates? That if the knowledge goes in the wrong hands, then it is not only going to be disastrous for that person, but also to the other world. तो विद्या पात्रता देखकर देनी चाहिए थी. जो हमारे यहाँ होता था गुरु शिष्य परंपरा में, पहले शिष्य को नैतिकता के लिए तैयार किया जाता था. आज क्या हो गया है? All the tests are originated towards intelligence, nothing to do with integrity. जैसे कि अभी आपने कहा, everybody wants to come to US for what? For the best education, for the best technology. But there was a time when everybody wanted to go to India for which education? जो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया, एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वचरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानव. अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेने के लिए आते थे, अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप करने के लिए आते थे. अदरवाइज इफ यू गो बाय टेक्नोलॉजी, तो बाय टेक्नोलॉजी रावण वाज फार सुपीरियर देन राम, बट स्टिल ही गॉट डिफीटेड.
So that is a different thing. I'm not going in the philosophical aspect. What I want to say कि ये इस बात के लिए इम्पोर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के साथ साथ यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा बुद्धि के साथ साथ विवेक, मन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है वेस्टर्न वर्ल्ड में, जबकि हमारे यहाँ सारा इंफेसिस मन पर है। Whenever you perform पूजा तो हाथ में चाहे अक्षत लेकर या पानी जल लेकर पंडित जी क्या कहते हैं, संकल्प लीजिए। संकल्प किसका विषय है? मन का कि बुद्धि का? मन का विषय। बुद्धि तो मन की दासी है। आपका मन जैसा होता है बुद्धि एक्ट करना शुरू करती है, मुझे ये करना, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सो व्हाट आई वांट टू से, ये कोविड का दोनों एस्पेक्ट क्या दिखा रहे हैं? आज शुरुआत है, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि जो हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यूज थी उसको डाइवर्ट करने पे हम कहां तक पहुंच रहे हैं। अब आप आइए, इकोलॉजिकल इंबैलेंस क्यों आने शुरू हुए? हम लोग के जन्म से पहले की बात है, बट बुक्स में हमने पढ़ा when Yuri Gagarin entered into space, what was written? Man has conquered space, as if space is an enemy needed to be conquered. During our childhood we are asked to write an essay, क्या विज्ञान ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है? जंगल काट कर शहर बसा दिए हैं, पहाड़ों को काट कर सड़कें निकाल दी हैं, नदियों को बांध कर डैम बना दिया है। ये कॉन्सेप्ट दैट वी आर देयर टू डोमिनेट द नेचर कहां से आता है? देखिए मैं यही कहूंगा, जब हम खुले मन की बात करें, ये किसी टेक्नोलॉजी और साइंस से नहीं आता है, ये सिविलाइजेशनल वैल्यू से आता है। Aristotle has written a book, Nature, कहता all the elements of nature for the service of mankind. In the book of Genesis, I am not quoting it to hurt anybody's religious sentiment, but जैसे हमारे यहाँ वेद के बाद उपनिषद है, तो book of Genesis में क्या कहा गया है? Man should be able to subdue nature. And you know the word subdue, it is not an English word. It has been adopted in English. It is a Hebrew word. And the literal meaning of subdue is भाले की नोक से दबाना. Then René Descartes and Francis Bacon said, all the elements of nature will be in wilderness if the man is not there. तो आपको विरासत में वो ज्ञान मिला कि प्रकृति आपके लिए है, प्रकृति का दोहन आपको करना है, और इसकी वजह से प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी है। तो फिर जो हुआ वो इकोलॉजिकल इंबैलेंस के रूप में सामने है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आवर सिविलाइजेशनल वैल्यू व्हाट से, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या। व्हेन वी कंसीडर द एंटायर नेचर एज मदर, तो माता से पोषण लिया जाता है, शोषण की सोच ही नहीं जा सकती। तो देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस। अब आप ये कहेंगे कि साहब वो तो प्रिमिटिव सिविलाइजेशन रहा होगा तो इतनी जरूरत ही नहीं थी रिसोर्सेस की। ऐसा नहीं। When you move from fine to finer technology, the so-called requirement of resources becomes less. जैसे we are on online, अभी कोविड ने ऑनलाइन का रिक्वायरमेंट सडनली बढ़ा दिया। अब आप सोचिए, इससे पहले हम फिजिकली मूव करते थे तो कितना टाइम, एनर्जी, फॉसल फ्यूल एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स जाती थी। आज मोर देन 60% चीजों में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, बिकॉज द टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड। तो आवर टाइम द टेक्नोलॉजी वाज ऑफ डिफरेंट सॉर्ट, जिसकी वजह से इस बात की जरूरत नहीं थी कि आप फिजिकली किस रूप में, किस ढंग से आगे बढ़े। तो जस्ट आई वॉन्ट टू गिव अ कनेक्ट that if there is a nuclear threat, why? Because there is a distrust among all the countries. अब जब हमने कहा सक्सेस एट एनी कॉस्ट, तो कॉस्ट कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल और भी देना चाहता हूं, हाउ द सिविलाइजेशनल वैल्यू इफेक्ट फ्रॉम कंट्रीज एंड जियोपॉलिटिक्स इन पर्सनल लाइफ। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, है ना ये कहावत? और इसका ट्रांसलेशन क्या है? जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। एक इंग्लिश है, एक पर्शियन है,
या उर्दू है, पर कभी आपने इसका इक्विवेलेंट किसी संस्कृत या हिंदी की लैंग्वेज में सुना है कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ उचित है? नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। क्यों? हमारा सिविलाइजेशनल वैल्यू ये है कि युद्ध का भी एक धर्म है, और वो इतना स्ट्रांग धर्म था कि जिसने पीठ कर दी उसकी तरफ नहीं है वार करना है, जिसने सर झुका दिया उसको नहीं मारना है। और कभी भी जब लड़ाई हुई तो सिर्फ आर्मीज में लड़ाई होगी, कभी आम पब्लिक का मैसेकर नहीं करना है। Even in this context, I would like to remind there was one General James Todd who has written a famous book about annals and antiquities of Rajasthan. He has talked about the martial races of the world, in which उसने इंडिया के बहुत सी रेसेस का वर्णन किया। तो उनसे पूछा गया कि you have talked about so many races of India, not about the other martial races of the world. So you know what he has said? I am talking about the martial races, not about the barbaric races. And one more thing he has said, कि लगता था कि भारत के जो राजा होते थे, इस वर्ड इज कि भारत के हिंदू राजाओं के लिए लड़ाई जीवन मरण का प्रश्न नहीं थी, वो स्पोर्टिंग स्पिरिट से लड़ते थे। उनके लिए शक्ति प्रदर्शन का टूर्नामेंट होता था। देन आफ्टर टूर्नामेंट वन पार्टी वन अनदर लॉस्ट, ओके यू गो योर होम, आई एम गोइंग ऑन। नेवर वेयर हमारे यहाँ था कि राजा का सर काट देना है, बाकी जगह सब जगह ये होता था। तो हमारे यहाँ जायज नहीं था। और प्रेम तो हमारे यहाँ समर्पण का प्रतीक था, जायज कैसे हो सकता है? और जब सब कुछ जायज होगा तो न्यूक्लियर थ्रेट भी होगी, जब सब कुछ जायज होगा तो बायोलॉजिकल वेपन भी होगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? अभी के सिचुएशन में वी हैव टू टैकल दिस, बट इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश अ सस्टेनेबल ग्लोबल ऑर्डर, इफ यू लुक इन द लास्ट 100 years, 3 बार तो ग्लोबल ऑर्डर बदल गया। So how sustainable it is? Even it cannot survive 3 generations. So if you want to have a sustainable global order, the values has to be different. And those values are only with us in the entire world. अब आप कहेंगे खाली वैल्यू से कुछ होता है क्या? टेक्नोलॉजी भी तो होना चाहिए, वर्ल्ड को डोमिनेट करने के लिए पावर भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही गई। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया ना, ये जग नहीं सुनता निर्बल जनों का शांति प्रवचन, शीश है उसको झुकाता जो कर सके रिपुमान वर्तन। इसीलिए जैसा अभी आपने उल्लेख किया, 98 में पोखरण एक्सप्लोजन हुआ ऑन 13th of May 1998, and in March 2000, in less than 2 years, Bill Clinton became the first US president who visited India for 5 days. शक्ति दिखी, आपके साथ दुनिया खड़ी हुई। Barack Obama went to address the joint session of Indian Parliament in 2010. He has said India is not emerging, India has emerged when it has emerged on 13th of May 1998. Now come to the present government. We were a very unique country. दुनिया में कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, चाहे आपके घर के पास की लड़ाई हो या इंटरनेशनल, द एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल इज कि पावरफुल कमजोर को सताता है। हमेशा वीक और कमजोर कहता है देखो ये बड़ा ताकतवर हमको सता रहा है। हम यहाँ उल्टा था, हम बड़े थे और हम ताकतवर थे, और हम 60 साल से यही कहते रहे हमको सता रहा है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए तो वेदर इट इज अ उरी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट, द एरा ऑफ इंडिया सॉफ्ट स्टेट बिकेम ओवर। अब देखिए टेक्नोलॉजी में भी हम कहां थे। आप लास्ट 100 ईयर के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में देखें और उसमें इंडिया की पोजीशनिंग देखें। जब 1900 के आसपास का एरा था तो उसमें हम कहीं थे ही नहीं। जब मिड 1900 के आसपास का आया फंडामेंटल साइंस के कुछ दौर में थोड़ा बहुत हम कहीं थे, सीवी रमन दिखते थे, जेसी बोस दिखते थे समवेयर। फिर एरा आया न्यूक्लियर एरा, स्पेस एरा, तो हम थे। फिर वी हैव इंप्रूव्ड among the top 5-6 countries in the world which were having the nuclear power or atomic power and is having the capability to send the satellites, we were there. उसके बाद एज ऑफ कम्युनिकेशन आई, यानी वो आईटी का एज आया जिसमें से आप लोग बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। नाउ वी बिकम अ प्रोमिनेंट कंट्री, one of the leading country. It means gradually the technology is changing, India's status is also changing.
तो बी रेस्ट एश्योर्ड, फ्यूचर में जो भी टेक्नोलॉजी आएगी, अभी मैं आज उस टॉपिक पर नहीं जाने वाला क्योंकि वो एक अपने आप में अलग टॉपिक हो जाता है, व्हाट इज गोइंग टू बी द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, बट बी रेस्ट एश्योर्ड नेक्स्ट एरा में वी विल बी द लीडर एंड वी हैव टू बी द लीडर। देखिए, फॉलो करके कुछ नहीं होने वाला। आप बहुत प्रॉस्परस बन सकते हैं फॉलो करके, लीडर नहीं बन सकते। पैसा तो बहुत से कंट्रीज के पास रहा, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाऊ, जापान, बहुत लीडिंग इकोनॉमीज रहे, but were they able to motivate and dominate the world? If we go strictly by the definition, the biggest, the highest per capita income किसकी है? सिंगापुर की। So technically that is the richest country. But what is the position? तो हमारा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि अब वर्ल्ड में जो चेंजेस आ रहे हैं, हमें उन चेंजेस के साथ बढ़ना है, मगर फ्यूचर की टेक्नोलॉजी की तरफ देखना है। क्वांटम कंप्यूटर में क्या होगा, जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या होगा, कंपोजिट मटेरियल में क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होगा, स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या होगा। अगर हम इस पे फ्यूचर में ध्यान देने में सफल हुए, इनमें से कोई और भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको अभी लोग जान ही नहीं पा रहे हैं, विच इज देयर इन द ऑफिंग, उसकी तरफ हमको टारगेट रखना होगा, वही वर्ल्ड ऑर्डर को डोमिनेट करेगा। और ये भी आप बात समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग उस फील्ड से हैं, डोमिनेट करने के तरीके भी अब बदल जाएंगे। जैसे 1900 से पहले जब हवाई जहाज नहीं थे तो सीधे जाके मारना होता था, हवाई जहाज से बम गिराने का आया, 1950 के आसपास एटम बम से आया, फिर 60 और 70 आते आते मिसाइल से आया, अब बायोलॉजिकल वेपन से भी आ गया है, और अब एक तीसरे प्रकार का भी वेपन है जिसको आप नहीं समझ पा रहे हैं। हम सब के हाथ में मोबाइल है। सोशल पानी की बोतल कितने की है? $1, $1.5 की, ठीक है। एंड व्हाट्सएप फ्री, फेसबुक फ्री, यूट्यूब फ्री। तो बेवकूफ है क्या जो फ्री में दे रहे हैं? आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीबॉडीज सेंटिमेंट, बट फ्रॉम दैट culture which says that there can never be a free lunch. If there is a free lunch, there has to be poison in it. तो अब इसको क्या समझें? ये फ्री क्यों बांटा जा रहा है? कहीं न कहीं अब ये एक अलग प्रकार की वॉर है, हाउ टू कैप्चर योर माइंड एंड हाउ टू मोटिवेट एंड गाइड योर माइंड। तो इसलिए मैंने कहा कि अब वर्ल्ड ऑर्डर को डोमिनेट करने के पैटर्न टेक्नोलॉजी बेस पर इतना ज्यादा बदलते चले जा रहे हैं, तो whosoever will be able to control the upcoming technology, they will be able to dominate. But finally, what will be the motivation factor? इस कॉन्टेक्स्ट में मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। 2014 से पहले की बात है, I was on a TV debate. कांग्रेस स्पोक्सपर्सन ने कहा कि we are the youngest country in the world. Today's youth want to seek and search for new, sophisticated, high technologies. We want to make an India economic superpower, and they are talking about Ram Mandir. I want to know that where does Ram Mandir fits in the emerging economic superpower, technologically advanced India of the 21st century? तो क्वेश्चन थोड़ा कठिन लगता है ना, किसी भी जवाब दे नहीं, ये तो हमारी कल्चरल वैल्यूज है और ये मेरी। मैंने कहा नो, मैंने कहा मिस्टर, वी डू नॉट वांट टू मेक इंडिया जस्ट एन इकोनॉमिक सुपर पावर। देयर यूज्ड टू बी सेवरल कंट्रीज हु एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हैव बिकम इकोनॉमिक सुपर पावर। वी वांट टू मेक इंडिया द वर्ल्ड लीडर, एंड इफ एनी कंट्री वांट टू बिकम वर्ल्ड लीडर, देन अदर देन इकोनॉमिक पावर, military power and intellectual power, it also has to symbolize certain set of values by which it can inspire, motivate, guide the entire world. And if we ask you that in the entire world, I'm not talking about in Asia and I'm not talking about India, entire world, if the set of highest moral values, those who do not have faith, I am using the word ever envisaged, can be seen in one character, that is Bhagwan Ram. दुनिया का इतिहास बड़ा भरा पड़ा है कि भाई भाई को मार के गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। उसके कंट्रास्ट में वो एग्जाम्पल कि पिता के एक वचन पे वन चले जाना और भाई का खड़ाऊ रख के शासन करना, दिस विल बी
the lighthouse for entire humanity, that how the moral values should dominate. And second thing, the entire world was there for dominance, for invasion, for annexation. On the contrary, जब भगवान राम ने श्रीलंका लंका को जीता तो क्या annexation किया? नो. अपना कोई वॉइसरॉय या डिप्यूटी अपॉइंट किया? नो. वहीं के एक व्यक्ति को जो वहां के टाइम के हिसाब से उनके लेजिटिमेट हेयर थे उसी को दिया का बस यू फॉलो द वैल्यूज. So in this era of clash of civilization, who will give the message of coherence? So this Ram temple will be the symbol of those highest moral values from personal life to geopolitical life. So it will be the like a lighthouse for the entire world. तो 21वीं सदी का महान भारत बगैर उसके संभव ही नहीं. That's why we want to say. और आज भी आप देख लीजिए, देखिए हम यूएस में बैठे हैं, मगर एक बात कहूंगा, कोलंबस आया था ना यहाँ. Columbus when entered here, so what he said, Red Indians. Where are Red Indians today? Virtually finished. Or east में there is a country Cambodia. The original name of Cambodia was Kambuj. Why Kambuj? Because Kambu Rishi landed in Cambodia. When they landed, तो वहाँ पे जो वो लोग उस समय ट्राइबल्स की तरह थे, उनको लगा कि ये शिप्स आए हैं तो कोई इन्वेजन हुआ है. तो जब इन्होंने बताया कि इन्वेजन नहीं है, वी आर हियर फॉर पीसफुल पर्पस, तो उनके जो भी किंग एंड क्वीन दोनों आए स्वागत करने के लिए. सिंस दे वर ट्राइबल कल्चर, दे वर नॉट प्रॉपर्ली ड्रेस्ड. तो कंबू ऋषि ने सबसे पहले अपना जो उत्तरीय वस्त्र था वो उतारकर रानी के कंधे पर रखा. पूरी जनरेशन, पूरी सिविलाइजेशन वही है, कोई चेंज नहीं. नोबडी इज वर्चुअली फिनिश्ड, नोबडी इज प्रैक्टिकली फिनिश्ड. So this is the difference of Kambu and Columbus, that how we want to deal with the world and how others want to deal with the world. And up till now, whatever the faults were there, whatever the mistakes were there, I think the world has realized up till now. And if not realized, then for looming nuclear threat of Russia-Ukraine war to again any type of biological weapon or mishappening like coronavirus is going to tell. दूसरी आप बात समझ लीजिए, टेक्नोलॉजी में हम आज आके बैठे हुए हैं यहाँ. आज दुनिया में 7 बिलियन पॉपुलेशन है. दुनिया किसी कोने में बैठ के अगर सक्सेसफुल हो जाए तो दे कैन पुट द एंटायर वर्ल्ड ऑन द नीज. बट 7 इथिकल हैकर्स कैन सेव यू फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव डिजास्टर. तो इसका मतलब ये भी हो गया कि जब आप टेक्नोलॉजी पे हायर एंड पे जाते हैं तो सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कितना इंटेलिजेंट है, कौन कितना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन किस वैल्यू से गाइड हो रहा है. अगर इफ यू रिमेंबर, टॉम फ्रीडमैन हैज रिटन एन आर्टिकल इन न्यूयॉर्क टाइम्स अराउंड 20 years back in which he has compared Infosys versus Al-Qaeda. उन्होंने ये कंपैरिजन दिया था कि दोनों एक साथ शुरू हुए लेट 70s और 80s में, दोनों एक साथ ग्लोबल प्रोमिनेंस में पहुंचे, दोनों में यूथ का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है और दोनों में कमिटेड और डेडिकेटेड यूथ है. और कमिटमेंट एंड डेडिकेशन टू द एक्सटेंट ऑफ हिट, बट वन इज नोइंग फॉर डिजास्टर एंड अदर फॉर क्रिएशन जस्ट बाय द सेट ऑफ वैल्यूज. तो टेक्नोलॉजी के साथ वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट है, पावर के साथ वैल्यूज इंपॉर्टेंट है. और वैल्यूज का अंतर क्या? अभी गुप्ता जी ने चाइना का बहुत वर्णन किया. आज चाइना का एक हॉकिश पॉस्चर है. यहां पर मैं एक पॉइंट थोड़ा और कह दूं, फिर मैं ज्यादा लंबा न लेते हुए समाप्त करता हूं. हम लोग यहाँ जब भी एशिया के बारे में बात करते हैं, आप यहाँ जाते होंगे तो एशियन कुजीन तो चाइनीज कुजीन आता है, ओरिएंटल आर्टिक्राफ्ट तो चाइनीज आर्टिक्राफ्ट आता है. मतलब एज इफ द स्पिरिट ऑफ एशिया इज रिप्रेजेंटेड बाय चाइना. On the contrary, the fact क्या है? We start from India, Burma, Thailand, Vietnam, Cambodia, Laos, Malaysia, Indonesia. Is there any Chinese influence? Indian influence. Mongolia, Buddhist.
Indian influence. In India, there is any cultural Chinese influence? No. On the contrary, prior to 1949, almost entire China was Buddhist. So that was an Indian influence. For which a very famous Chinese thinker, Hu Shi, has said that India has culturally dominated and controlled China for more than 2000 years without sending a single soldier across the border. तो फैक्ट तो ये है कि चाइना में इंडियन इन्फ्लुएंस था, पूरे एशिया में इंडियन इन्फ्लुएंस है. मतलब आज थाईलैंड का किंग टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द 10th. साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी अपने को डिसेंडेंट मानती है भगवान राम का. द नेम ऑफ द इंडोनेशिया, you know the meaning of the word Indonesia. Nesia is a Greek term which means island, द्वीप, and Indonesia means Indian island. You know what is the capital of Indonesia? Jakarta. Jakarta word कहां से आया है? जयकर्ता से आया है. Because there were two provinces, जयकर्ता and योगकर्ता. Still आप जाइए नेट पर सर्च करिए, जकार्ता के बगल में आज भी प्रोविंस है by the same name योगकर्ता. And still they say that the Asian spirit is represented by China. तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि अब हमें, जो मेरा सिर्फ लास्ट में सबमिशन ये है कि जो इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर, यू हैव टू बी रेस्ट एश्योर्ड. कई बार आप कहेंगे ना ये बातें हैं उतना समझ में नहीं आती है. रेस्ट एश्योर्ड मैं क्यों कह रहा हूं? आज से 2500 साल पहले जब वर्ल्ड का पावर सेंटर भारत था, वी वर द पावर सेंटर, इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड इंटेलेक्चुअल पावर सेंटर. 2500-3000 साल पहले जब हमारा डाउनफॉल हुआ तो पावर सेंटर कौन बना वर्ल्ड का? नेक्स्ट राइज ऑफ किसका सिविलाइजेशन हुआ? पर्शियन एम्पायर, किंग डेरियस ऑफ पर्शिया. जब उनका डाउनफॉल हुआ तो किसका राइज हुआ? मेसोपोटामियन एम्पायर, बगदाद एम्पायर. देखिए, शिफ्टेड फ्रॉम ईरान टू इराक. Then, after the Baghdad Empire, which empire came to the height? Turkish Empire. Seljuk Turks and Ottoman Turks. Constantinople became the capital. When Turkish Empire down, and the Roman Empire, from आज का इस्तांबुल to Rome. Roman Empire का इन्फ्लुएंस खत्म हुआ तो पुर्तगाल और स्पेन का जमाना है. देखिए पैटर्न ऑफ शिफ्टिंग. पुर्तगाल स्पेन के बाद ब्रिटेन और फ्रांस का जमाना आया. ब्रिटेन और फ्रांस के बाद अमेरिका का जमाना. फिर अमेरिका में सबसे प्रॉस्परस बना वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स में. नाउ अब आ जाइए फिर 10-30 साल में. देन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जापान बिकम मोस्ट प्रॉस्परस. देन द पावर कम टू 7 टाइगर्स ऑफ एशिया पैसिफिक, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाओ. नाउ कम इन द लास्ट 20 years चाइना. व्हाट नेक्स्ट? इंडिया. बस अब अंतर ये रहेगा. फाइनली मैं ये कहता हूं करते हुए, चाइना इकोनॉमिकली तो बहुत बढ़ गया. मैं 2011 में चाइना गया, मैं तो बात देख के आया. चाइना ने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ की है. बट वॉज चाइना जस्ट अ बिग कंट्री? इट वॉज अ बिग सिविलाइजेशन. एंड इफ यू लुक एट टुडेज चाइना, दिस हैज बिकम द कल्चरल कॉलोनी ऑफ यूएस. वहां का यूथ क्या चाहता है? वही एक अच्छी सी सैलरी मिले और फिर डिस्कोथेक और पब में दारू पी के झूमे. बस उतनी जिंदगी. कहां वो कन्फ्यूशियस, ताओ, सिंतो और बुद्ध का चाइना चला गया? मतलब दिस इज अ पर्सनल थिंग बट आई वांट टू से, वहां का प्राइम मिनिस्टर वही सूट कोट टाई पहन के घूमता है. एजेड लेडीज भी पूरी तरीके से वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती है. कोई वैल्यू नहीं रह गई जो पुरानी वाली थी. पैसा आ गया, सिविलाइजेशन चला गया. अब दुनिया में एक ही मेजर कंट्री बचा है, वो है हम, जो अभी तक सिविलाइजेशनली चेंज नहीं हुए. हमारा सिविलाइजेशनल कंटिन्यूम बचा है. तो अब यहां पे बात जो भी मैंने अभी आपको ये पूरा सर्किल बताया, ये भी फिलोसफिकल था. अभी सर्किल एक और फिलोसफिकली बात कर रहा हूं. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो उन्होंने सिद्धांत दिया है ना. तो इफ वी आर मैनेजिंग टू सर्वाइव फ्रॉम द एजेस अननोन, देयर हैज टू बी सम फिटेस्ट एलिमेंट इन अस. अब उस फिटेस्ट एलिमेंट में बहुत सारा टेक्नोलॉजी भी है. जैसे अभी मोदी जी ने योग दिवस किया.
एफडीए ने जितना आगे कर रखा रिसर्च, हम कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकते फार्मास्यूटिकल, फैक्ट। 30, 40, 50 साल में भी आप उनकी फार्मास्यूटिकल बराबरी नहीं कर सकते। पर अगर आप योग का पालन करें तो 80% मामलों में हमें जरूरत ही नहीं। उसके बाद क्या किया, देखिए एक नई सोच के हिसाब से ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए WHO का सेंटर बना। अब ट्रेडिशनल मेडिसिन में सबसे स्ट्रक्चर्ड नॉलेज हमारे पास है, सिस्टमेटिक आयुर्वेद, उसका सेंटर हमने भारत में बनवाया। अब इसके बाद जो थोड़ी बहुत बीमारी आएगी तो आप अब तो सब हर्बल मेडिसिन की बात करते हैं ना, उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लाके तो 80% में तो हमें योग की मेडिसिन जरूरत नहीं, बचे 20% का जो 80% है हमें उसकी जरूरत नहीं। अगर हम उस ट्रेडिशनल मेडिसिन को सही ढंग से यूज कर लें तो 5% में चाहे सर्जरी होगी या एक्सीडेंट होगा तब आपकी जरूरत होगी, 95% में आपके बिलियंस ऑफ डॉलर आपको मुबारक। इसीलिए मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजी का पैराडाइम बदलता है तो सारी चीजें बदल जाती हैं। तो हमारे पास उसका भी जवाब है, हमारे पास वैल्यूज का भी जवाब है। और फाइनली मैं कहूंगा कि साइंस से शुरू किया था, साइंस पे ही खत्म करता हूं। हम सब ने सीवी रमन का नाम सुना, फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर ऑफ इंडिया इन फंडामेंटल साइंस। अरे तो हाफ ट्रूथ है, ही वाज नॉट द फर्स्ट इंडियन, ही वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन, फर्स्ट नॉन व्हाइट टू गेट अ नोबेल प्राइज इन एनी ब्रांच ऑफ फंडामेंटल साइंस, एंड ही वाज इंडियन। अब आपसे पूछूं, 21st सेंचुरी के जो अभी तक के 21 साल गुजरे हैं और 22वें में हम चल रहे हैं, अब तक की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी क्या है? गॉड पार्टिकल व्हिच वाज इन्वेंटेड इन सर्न लैबोरेटरी इन 2012 जुलाई। और गॉड पार्टिकल का साइंटिफिक नाम क्या है? हिग्स बोसॉन, which is named on the basis of two scientists who have first given the concept of this. One was Mr. Peter Higgs of England, another boson is from Satyendranath Bose of India. तो emerging साइंस के नए एरा पे अब हमारा हस्ताक्षर दिख रहा है। यह भी नियति का एक संकेत है कि सर्किल भी घूम पे हम पे आ रहा है। फ्यूचर की जो साइंस है उस पर भी हमारा हस्ताक्षर दिख रहा है, और वर्ल्ड ऑर्डर में जो कॉम्प्लिकेशन दिख रहे हैं उसका सोल्यूशन भी हमारे ही पास दिख रहा है। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू से, अगर गॉड पार्टिकल में हमारा नाम है तो वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज हैविंग एन आंसर फॉर बोथ पार्टिकल एंड गॉड। अदर कंट्रीज के पास, किसी के पास गॉड का आंसर है तो पार्टिकल का नहीं है, पार्टिकल है तो गॉड का नहीं है। इसलिए अटल जी की एक बड़ी फेमस कविता थी, उसी को कह के समाप्त करता हूं। आप सबने शायद, पुराने लोगों ने जरूर सुनी होगी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसकी एक लाइन थी कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू धर्म हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा When we will emerge, nobody has to be afraid of us because we do not want to become the superpower of the world. हम तो गुरु बनना चाहते हैं। पावरफुल आदमी में अंतर क्या रहता है? You are standing by the side of a powerful man, you feel a little bit hesitant, sometimes a little bit awe. But जब आप गुरु के बगल में बैठे होते हैं तो what you feel? Exalted, enlightened, and full of joy. So we do not want to dominate the world, we want to motivate the world. If anything is to be dominated in our culture, it's your personal desires, not the other countries. तो फिर उसी कविता के अंतिम लाइन कह के समाप्त करता हूं कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए, कोई
कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, इसी में अगले वर्ल्ड ऑर्डर का संदेश है। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। धन्यवाद। Yeah, I think we'll open for question answer, but it will be few, and I will be randomly selecting across. Yeah. No follow and no speech. Okay, no need for mic, right? That's it. Okay, I'll try. Thank you very much, Sudhanshu ji, for the wonderful sharing of your thoughts. You mentioned about the values, which is obvious. We all, I guess, most of us believe that yes, values, we have a lot of potential and we already do it too. Technology पे आप थोड़ा elaborate करेंगे, like everybody is trying to be the top in technology, right? Especially Silicon Valley and some other places. So can you elaborate on the technology part and the leadership which you feel India can also have? Very elaborate topic, but I would like to summarize into 3 sentences. If you look at the development of technology in the last 200 years, how it moved, पहले machines आई, machines किस पे operate करती थी, particle पे, यानी mechanical force था. Then engines आए, that is a chemical force, you have moved in the matter. Then electricity आई, so chemical force moves with the molecules, and electricity is the movement of electrons in the intermolecular space. और एनर्जी आ गई, दुनिया बदल गई, इलेक्ट्रिसिटी आई, फिर क्या आया, एटॉमिक एनर्जी. नाउ यू हैव मूव्ड इन द एटम. फर्दर एनर्जी आई, स्पेस एज आती नहीं अगर एटॉमिक एनर्जी नहीं होती. देन वी मूव्ड इनटू द न्यूक्लियस. न्यूक्लियर एनर्जी आई तो पार्टिकल के तो बेस तक पहुंच गए, फिर क्या हुआ, देन वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी आई, फर्दर दुनिया बदल गई. तो संदेश क्या जा रहा है, when we are moving from fine to finer element of energy, the vast ocean is waiting for us. और हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है, अणोरणीयान महतो महियान. अणु से अणु की तरफ जाओगे, सूक्ष्म से सूक्ष्म की तरफ, तो विराट से विराट होगा. अब मैं इस पे आगे बोलना नहीं चाहता, आपसे बस ये फूड फॉर थॉट छोड़ता हूँ. जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी तक आ गए, इससे ज्यादा फाइन क्या होगा, इसके ऊपर सोचिएगा. वही एनर्जी आने वाली 21st सेंचुरी में डोमिनेट करेगी. Thank you. Between Russia and US in Ukraine, how do you think it will end or it will turn out? मैसेज दिया है. पहली बार ऐसा हुआ है, सिर्फ एक ही कंट्री है, इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जिनकी कैपेबिलिटी है दोनों से बात करने. ऑल मेजर पावर, अमेरिका का प्रेसिडेंट बात करेगा तो पुतिन उसकी बात पे ध्यान नहीं देने वाले, चाइना बात करेगा तो यूक्रेन ध्यान नहीं देने वाला, सिर्फ मोदी जी बात करेंगे तो दोनों ध्यान देने वाले हैं. ये एक अंतर दिख रहा है. और जो मैंने आपसे कहा, रशिया यूक्रेन वॉर सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सामने लाने वाला है. तो ये वॉर हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है लंबा चलेगा, बट ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सामने लाएगा जो वर्ल्ड की थिंकिंग को चेंज करेंगे. जैसे कोविड आया, इकोनॉमी चेंज हुई. 30 साल पहले वर्ल्ड का स्ट्रक्चर बाइपोलर से यूनिपोलर हुआ था, अब यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ बढ़ रहा है. तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई. ये वॉर भी बहुत कुछ चीजों को, कॉन्सेप्ट को चेंज करने का काम करेगी. Russia war. Next question, someone has raised hand here. Yes. Thank you. If you can speak loudly, then it's fine. So we've assembled here talking about the world order, and it's a very schizophrenic relationship. We all know, but we won't verbalize it. That the villain is in a way USA, even for India, because the territorial war that we have with Pakistan and China, indirectly it is funded by USA. Like Pakistan can have a rich cousin syndrome for India and have the animosity. But if it didn't have the money and the arms which America provides to Pakistan, it couldn't have the terrorism in India. And even with China, it's powerful because of the economic trade pacts with US-China. And then we have to sit quiet and have this diplomatic face
and have a relationship, because always USA foreign policy sucked towards India. So what we're talking of getting to be the Vishwa Guru, and we have all these tyrants here and how to handle the whole. How do we get there? ये भी मैं कोशिश करता हूँ 2-3 लाइन में बताने की। आप ऐसे फंडामेंटली समझिए, जैसे 2 डोमिनेटिंग थॉट्स थे, एक कम्युनिस्ट था, एक मार्केट इकोनॉमी थी। आज जितने भी थॉट हैं, चाहे चाइना है, भारत, अमेरिका है, तो मार्केट इकोनॉमी, कंज्यूमरिज्म एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ के ऊपर ही बेस्ड है। जिसके बाद जितने कैपिटल रिसोर्सेज वो उतना डोमिनेट करेगा। सारे थॉट में कोई झगड़ा नहीं है, सब एक मामले में सेम है। खूब क्रिएशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, खूब कैपिटल होना चाहिए, एक्सेसिव दोहन होना चाहिए प्रकृति का, और अपने कंट्री के पास सारे रिसोर्सेज होने चाहिए। इसमें तो सब सेम है ना। बस केवल झगड़ा इस बात का है, जैसे कम्युनिज्म कहता था कि गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, कैपिटल कहता था, कैपिटलिज्म कहता था पर्सन के पास होना चाहिए। आज कंट्रीज में झगड़ा है कि मेरे पास होना चाहिए कि तेरे पास होना चाहिए। बट हमारा जो विश्व गुरु का हमने कॉन्सेप्ट क्यों बोला, हमें कहते हैं जो जिसका है उसके पास रहना चाहिए, केवल उसे सही नियम से चलना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ जो कहा गया, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा ना, स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो गया हुआ। हमने किसी देश को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की है। सबके रिसोर्सेज अपने ढंग से यूज करो। कारण क्या है, आपको एक और बात बताएं, जितना बड़ा एक कमरा है ना, नेचर की, एक नेचुरल लैंड का इतना बड़ा पीस देख लीजिए कि एक ही प्रकार का फूल उगता है, एक ही प्रकार का पौधा उगता है ना। डाइवर्सिटी एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी इज द लॉ ऑफ नेचर, और वो हमने इंडिया में भी करके दिखाया है। आप एक कश्मीरी को देख लीजिए, एक केरलाइट को देख लीजिए, गुजराती को देख लीजिए, नागालैंड वाले को देख लीजिए, खान पान, रहन सहन, भाषा भूषा में इतना भारी अंतर है, दुनिया किसी कंट्री में नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा फाइनली कि इस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का जवाब कोहेरेंस वही दे सकता है जिसने वेरियस कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज में कोहेरेंस करने की कैपेबिलिटी पाई हो। और अल्टीमेटली जो लड़ाई चल रही है ना, अब तो लड़ाई उस लेवल पे पहुंच गई है, सबके पास न्यूक्लियर वेपन है। ये तो कैसी हो गई कि आपके घर में 10 लोग हैं, इनके पास राइफल है, बगल वाले में 6 के पास राइफल है। अब लड़ाई होगी तो क्या अंजाम होगा आप समझ सकते हैं। तो अब आखिर में या तो दोनों को खत्म हो जाना है, या दोनों को फाइनली कहना भाई अपनी अपनी राइफल थाने में जाके जमा कर दो। अब क्या होगा ये आने वाले टाइम में समझ में आएगा। की जो बात की कि आने वाले समय में वैल्यूज जीतेंगे, तो भारत में ये वैल्यूज है, आप है तो आप दर्शा रहे हैं, थैंक यू। लेकिन जो हमारी स्कूलिंग सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम कैसे होगी कि आप जैसे और सुधांशु उत्पन्न हो भारत में, ये कैसे होगा? ये एजुकेशन सिस्टम में बात सही है कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट किया गया था। वो एक अलग टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा। बस मैं इतना ही आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपसे मैं पूछूंगा आपसे 200 साल पहले इंडिया में रेट ऑफ लिटरेसी क्या थी, एज पर द ब्रिटिश रिकॉर्ड्स इन सर्टेन एरियाज इट वाज 97%। ब्रिटिश पार्लियामेंट के डाटा है कि हर गांव में एक विलेज है, वो अलग बात है, वहां से आज हम डिस्टॉर्ट कर दिए गए। फिर आजादी के बाद भी जो कॉन्सेप्ट था, जो थॉट प्रोसेस था, जो हमें हिस्ट्री कल्चर पढ़ाया गया, एक होता है डिस्टॉर्टेड, एक होता है कुछ जगहों पे 100% झूठ। तो मैं 100% झूठ वर्ड कह रहा हूं। अब वो एक चेंज करना एक बड़ा प्रोसेस है, वो प्रोसेस चल रहा है धीरे धीरे। होपफुली नेक्स्ट ईयर तक इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट ने 2020 में बना दी, नेक्स्ट ईयर तक सिलेबस भी आ जाएगा। बस प्रोसेस सिर्फ एजुकेशन तक नहीं, वो मीडिया से लेके और मूवी तक है। जैसे एक बात आपसे कह के छोड़ता हूं, पिछले 50 साल की कोई इंडियन मूवी बताइएगा जिसमें भगवा वस्त्रधारी को पॉजिटिव रोल में देखा हो। चलिए भगवा वस्त्र छोड़ दीजिए, कंठी माला पहले व्यक्ति को पॉजिटिव रोल में देखा हो, वो छोड़ दीजिए। तिलक लगाए व्यक्ति को पॉजिटिव रोल में देखा हो, वो छोड़ दीजिए। धोती कुर्ता पहने व्यक्ति को पॉजिटिव रोल में देखा हो। दिस इज टिपिकल अटायर ऑफ अ विलेन। तो आप सोचिए कि वो अटैक कहां से था। तो हमें आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, आने वाली पीढ़ी को एक तो है गवर्नमेंट के लेवल पे सिस्टम चेंज हो, सेकंड सोसाइटी के लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन हो, और फैमिली के लेवल पे हम आने वाली पीढ़ी को ये चीजें बताते हैं। We see a lot of Karyakartas, in Bengal, in Kerala,
there's a lot of people getting sacrificed. I mean, say, it has been affecting, whatever they are trying to do, but with lot of, undue means submissive kind of a thing, and they are trying to, put under the democratic values and everything. So the fight is actually within the global era. Hindophobic, we are fighting here in US, and as well as in India, when we try to defend that. In India, certain kind of minor things are blown out of proposition, but at the same moment, there are certain things where people are getting killed within Bengal or Kerala. So, what do you think? What would be the best approach to take care of this situation? Because there are certain people who are not happy with how the things are going within the domestic. देखिए बंगाल और केरल में जो हो रहा बहुत दुखद है, तो उसमें हम लोग उनको लीगल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशनली दिस इज स्टेट सब्जेक्ट. Directly central government cannot intervene. We can take an extreme step, that is dismissal of the government, which is not technically possible. So we are having full concern about those who are suffering there. तो अब वो एक प्रोसेस है संघर्ष का, अलग अलग हिस्सों में समय समय पे संघर्ष हुआ था, दुखद है, पर उसमें जो सपोर्ट हो सकता है वो केंद्र सरकार कर रही है, एक्शंस भी ले रही है, एजेंसीज के थ्रू भी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है. जितना आप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में प्रेशर डाल सकते हो कर. दूसरा जो आपने हिंदूफोबिक वर्ड कहा, तो मैं एक बात कहता हूँ, मैंने वहां भी कहा था, आप लोग यहाँ पे इसको बात कह सकते हैं कि आफ्टर आवर गवर्नमेंट के we tried to make India a truly secular country, and I am saying with full conviction because before 2014 India was a partially Islamic country. You can say how? When I say you name a single secular country in the world in which the constitution of Sharia, provisions of Sharia were having constitutional validity. Triple talaq, mehram, halala, haj subsidy, salaries to Maulvi. I challenge, quote, a single country in the world if the Maulvis get a salary, and not only this. In Shahbano case, if Supreme Court has given anything against Sharia, the Supreme Court has been overruled in favor of Sharia. Name a single non-Muslim country in the world. So that's why we want to bring the true secular character, and those who want to continue with the previous partial Muslim character, they are trying to give a bad image. Due to time constraints, last 3 questions we'll take. Sorry about the time constraint. Thank you, Trivedi ji. It's a very inspiring speech. So I will go to one very basic grassroots issue about youth in India, right? So here, if you see any American, right, they are proud to host their flag. So are we seeing the same kind of pride in the Indian youth? One couple of issues I see is, so if you see a lot of issues are dividing the country. It could be religious, it could be caste, it could be rich and poor, right? Now even like who makes best movies, Bollywood, Hollywood or Tollywood, right? So in this kind of atmosphere, how does the youth get motivated? And when a lot of political parties, they are giving left and right freebies. Garme baito, we are going to give you 10,000, 5,000 every day or every week. So what makes them to get motivated and work for the welfare of the country? Is on the law. It could be domestic or international. So in India, so with the Supreme Court, we see that the law is different for different set of people. Same in the UN also, in the international. So I thought you would be talking about UN, how it will be the role in the future. So if you can talk about that. Yeah, this question was from Zoom. Somebody's asking about the 800 Pakistani Hindu families that came here and could not get citizenship. So any insight on that? So pride in youth, Pakistani families, Hindu families not getting citizenship, and what was the second question? Position of India in UN. 3 questions. देखिए जहाँ तक प्राइड इन यूथ की बात है, तो बहुत हद तक ये जो आपने कहा फ्लैग तो एक इशू है. अमेरिका तो फ्लैग का कहाँ यूज कर लेते हैं वो एक अलग बात है, बट प्राइड इन यूथ को इनकलकेट करना हमारी फैमिलीज की भी जिम्मेदारी है.
और आजकल एक और बात भी है जो बहुत खतरनाक ढंग से डेवलप हो रही है। इफ यू लुक एट द टीवी एड्स, हर टीवी एड में एक बच्चा या बच्ची अपने माँ बाप को कुछ ज्ञान दे रही है। ये फ्यूचर के लिए डेवलप किया जा रहा है, टू ब्रेक द फैमिली, बिकॉज मार्क्सिस्ट फोर्स को भी फैमिली सबसे बड़ा हर्डल है। जिनको कन्वर्जन करना है उनके लिए भी फैमिली हर्डल है, और मार्केट फोर्स के लिए भी फैमिली हर्डल है। तो फैमिली को स्ट्रेंथन रखिए, प्राइड ऑफ यूथ आप उसमें इनकलकेट करेंगे। एजुकेशन सिस्टम कितना भी करेगा वो नहीं कर पाता है। अब उदाहरण के लिए मैं एक बात कहूँ, इंडिया में कास्ट और रीजनल सेंटीमेंट के ऊपर बहुत जल्दी लोगों को प्राइड आ जाता है, नेशनल सेंटीमेंट पे नहीं आता है, जबकि एजुकेशन सिस्टम तो नेशनल को दिखाता है। तो इसलिए फैमिली वैल्यूज के ऊपर हम ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बाकी तो गवर्नमेंट जो एक लार्जर एटमॉस्फेयर बनाना है वो बनाने के लिए प्रयास करें। जो पाकिस्तानी हिंदूज वाली बात कही, तो हमने तो सीए में जो कुछ स्टैंड लिया है वो अपने आप में अब तक जो लोग आए हैं उनको ऑलमोस्ट सारी सुविधाएं दे दी, मतलब देने का प्रावधान कर दिया गया लॉन्ग टर्म वीजा में। Virtually, other than vote, they will be having out. They can have their bank account, they can have the property, they can have study and other things. As far as those 800 things are concerned, I do not know the exact technical detail what has happened. Maybe some technical thing which has gone beyond the capacity or something like that. Otherwise, whosoever has come in the last several years, lakhs of people have come and they are being given a long-term visa. And by virtue of that visa, they can live here, practically enjoying all facilities which a normal citizen is having. I have a question. I'm a Sikh. Let's keep this as a last question. Sorry. My name is Sukhi Chahal. I'm a Sikh. I'm proud to be Sikh. The question this raised, CAA, very important because many Sikh people benefited from this CAA because we were 24/7 in touch with when the people were suffering in Afghanistan and also in Pakistan. Many people took the advantage of that one because many community people, even from America and Canada, they tried to bring them over here. They could not do it because it takes a long time. Now all these Sikh family, I'm talking about the Sikh family, there was the Hindu family too. And right now they are safely, we are in touch, they are safely settled down in Delhi and the other part of India. Prime Minister Modi has done so many for the Sikhs. Every day, so many positive incidents are happening, positive outreach is happening. My question to you, if Prime Minister is so serious, genuinely serious, I have so much respect actually the way he's doing it. Although there is so many people in the community agree, so they are giving him hard time, especially in the diaspora, many radicals. Where is the gap? After doing so many positive things for the Sikh community, why this message is not going abroad? Why this message is not going in the diaspora? Where is the gap? Because where the system is the failure, because having done so much for the Sikh community by one party, by the BJP, where the Congress party has done anything you can imagine. Genocide has been done, Darbar Sahib attack has been done during their time, and they have been converted. They are being so close to the community. On the other side, whatever the BJP and the other whole Hindu community and even the RSS is doing, how come where the gap is? That's what is bothering me. If you can explain it, please take your time. Thank you. देखिए, इसमें जो आपने जो क्वेश्चन किया, इसमें जैसे इंटरनेशनल लेवल पे 200 समथिंग थे सिख जिनका कि इंडिया में वीजा बैन था। It was 340. Something. Now it is 340. It was 328 have been taken. हाँ, only two are left. बाकी सब हटा दिया। जो स्वर्ण मंदिर में GST से उसको फ्री किया, वो बहुत सारी चीजें करतारपुर साहब अपनी जगह। बट जो आपने बात कही ना, as far as जिसको हम गैप कहते हैं, गैप टू होम कम्युनिकेशन गैप, जस्ट जिस समय फार्मर्स मूवमेंट चल रहा था, तो ये कहा गया था ना कि हम समझाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं और इसलिए प्राइम मिनिस्टर शोज लार्ज हार्टेडनेस एंड विथड्रॉ विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल कि वो सही है गलत है, विथड्रॉ। पर आप सोचिए जो लोग कह रहे थे कि उनको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, जो पंजाब के सबसे बड़े किसान नेता थे, उनकी जमानत जब्त हो गई।
इससे साफ समझ में आता है ग्राउंड रियलिटी क्या थी और जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था कि दे आर हैविंग समथिंग विच इज टू बी कम्युनिकेटेड। यूपी में जो सबसे बड़े किसान नेता थे, उनके गांव में उनके कैंडिडेट से ज्यादा बीजेपी को वोट मिला है और जितने लोग उनकी पंचायत में आते थे उतने वोट उनको नहीं मिले। तो दैट शोज कि व्हाट वाज द ग्राउंड रियलिटी एंड व्हाट वाज द परसेप्शन। तो इसमें देखिए थोड़ा ये भी है कि मीडिया का एक सेक्शन है जिसको ये लगता है कि कैसे कोई चीज निगेटिवली प्रोपोगेट की जा सकती है। मतलब ऑन द लाइटर नोट आई वुड लाइक टू से कि लेफ्टिस्ट हैव बीन लेफ्ट ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर 2 places, that is Cuba and North Korea. Other than 2 places are one section of Indian media because that is democracy and one section of US media that is democracy. So taking advantage of democratic issues उन लोगों ने किया है। तो जो आपने बात कही रियल परसेप्शन कुछ और है। अब ऑन द लाइटर नोट मैं एक और बात कहूं, भाई कांग्रेस ने पंजाब में इतना स्टैंड लिया फार्मर्स इशू पे, क्या रिजल्ट रहा? और एक ही पार्टी थी जिसकी की गवर्नमेंट ने चटपट अपनी विधानसभा से पारित कर दिया, वो थी आम आदमी पार्टी, एंड दे सर्व द पोल्स। तो इससे भी कभी दिखता है कि जो ग्राउंड रियलिटी है और किसी इशू को लेकर जो परसेप्शन क्रिएशन है, दोनों में भारी अंतर। आपने सीए की बात कही तो मैं एक फैक्ट आप लोगों के नॉलेज में डाल देना चाहता हूं। सुखबीर सिंह बादल जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डाटा था कि 2013-14 में 62,000 सिखों ने जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए जिन्होंने आवेदन दिया था नागरिकता के लिए, और 1,82,000 पाकिस्तानी 42,000 1,42,000 ओनली इन द ईयर 2013-14। आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीए गवर्नमेंट से। दोज हु हैव अप्लाइड फॉर सिटीजनशिप, कोई पूछे तो उससे कहेगा भाई बताओ तो कितने मुस्लिम्स ने अप्लाई किया था? You give number, forget about 1,000, even hundreds you give. जिन्होंने किया था उनमें से 5 साल में 530 पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुस्लिम्स वर गिवन सिटीजनशिप इंक्लूडिंग अदनान सामी। तो भाई अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो फिर किस बात का डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हो? मतलब आई हैव नॉट गॉन इन द एग्जामिनेशन हॉल, आई हैव नॉट सबमिटेड द क्वेश्चन पेपर, स्टिल आई एम सेइंग द विक्टिमहुड दैट आई हैव बीन फेल्ड। तो आगे से कभी किसी को भाई तू स्टैटिस्टिक्स बता दे, हिंदू और सिख का स्टैटिस्टिक्स मैं बता रहा हूं जो आपकी सरकार का है, हमारा नहीं। हमारे में आप कहेंगे ये मैनिपुलेशन वो मैनिपुलेशन। आपके मिनिस्टर का फ्लोर ऑफ द हाउस पे है 1,82,000 हिंदू, 62,000 सिख जिन्होंने अप्लाई किया है। आप बता दो कितने मुस्लिम ने अप्लाई किया? अप्लाई करो ना दे तब हम डिस्क्रिमिनेशन कह रहे हैं, अप्लाई नहीं किया और उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन। Ambassador Viren, Gupta ji, FITS founder member Sri Kande Rao ji. It's my honor and privilege to propose vote of thanks on this occasion. I, Janmejay Singh, on behalf of FITS, would like to thank you, sir, for coming all the way from India and giving a wonderful speech. You have really enlightened us, and I would like to summarize that we will motivate world, we will not dominate. That is really essence of your speech, and you have really inspired us. And we NRI, we will do our best to be India as a world guru. Thank you, Ambassador Viren ji, for sharing your view on Indo-US and China relationship and current world order. And I would like to thank all FITS members and all individuals who has helped us. Thank you so much.